few students who have kept your DP very weird. I request you to please change your DP and keep your own DP. Okay. कार का डीपी ऐसे सब मत रखो. कल भी मैंने बोला है स्टूडेंट्स को. कुरैशी बख्तियार प्लीज चेंज योर डीपी. रितेश कांबले, हुजैफा, थोड़े मॉडलिंग के पिक्स मत डालो. आई नो यू ऑल आर टिकटॉकर्स एंड रील मेकर्स एंड ऑल दैट, बट दिस स्पेस इज नॉट फॉर दैट. देखो आदित्य ने कल चेंज किया, उसका डीपी सिंपल सा रखा है. मौजीज कल भी बोला था आपको डीपी चेंज करने के लिए. सेजल बेटा, वी वांट टू सी योर फेस, यू लुक वेरी प्रिटी, चेंज योर डीपी. Guys, I'm audible now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am, you yes are. लोग नहीं बोल रहे हो. हाँ Yes, ma'am. क्या Yes. थोड़ा आप लोग आपका खुद का डीपी रखो, सिंपल वाला. ओके. एंड फरहान बेटा, फोटो में आप मास्क हटा दो. यहाँ पे हमें Yes, we ma'am. need to, yeah, see, if we are doing the supervision, it's a different thing. From the department we know you, है ना? But if the other teacher is doing the supervision, it will be difficult for them. Okay, ma'am. Beta, please change karo DP. It's a very lovely DP. I adore it. Okay, but kindly keep a simple picture of yourselves. Okay. कुरैशी बख्तियार, आप तो urgently change करो DP. It is very scary and I think सबसे ज्यादा डेंजरस डीपी रखा हुआ है आपने. हटाओ वो प्लीज और खुद का डीपी डालो. It's not important to do it now itself. You do it afterwards. Okay. All right. I'm sharing the screen. You please tell me if it is visible or not. Just a moment. Yeah. Okay. We begin with this new answer, which is role of effective leadership in strategic implementation. We have actually seen answers on, types of leaders and quality of leaders, but what is their actual role, okay, in context to effective strategic implementation. Okay, let us understand that. Okay, I'm not going to take the definition of leadership as we have seen in so many answers already. So we begin with strategic leadership, and their major role. So the first one is introducing change. कौन रीड करेगा? फास्ट रीड करना है. सरिता, आप स्टार्ट करेंगे प्लीज. Yes, ma'am. Introducing change. Change is a must for organizational growth and development. Without change, an organization would lead to doom. Therefore, introducing change in the organization is one of the prime responsibilities of the leadership. Okay, change is something which is very important. I have been teaching you in so many lectures already that change is something which is constant. Other things may keep this, but change is something which is constant. यानी कि changes तो होते ही रहने वाला है. तो changes के लिए आपके पास effective leader होना बहुत जरूरी है, because who are leaders? They are the ones who influences people. Correct ना? तो organization में employees उनका सुनते हैं. Okay, so if the leader is propagating change, people would accept it. Let us see how it is further mentioned in the textbook. I hope it is readable. Yes, ma'am. Organizational change take place as a result to change in technology, consumers' tastes, likes and dislikes, change in competitors' strategy, change in government policies, etc. Organization has to respond and adjust to the change in the environment. Failure to do so would result in poor performance of the organization and ultimately closure. Of course, if you are not accepting changes, you will be out of the competition. Eventually, you have to close your or you have to shut down. Okay, because you need to understand changes that is happening in the market. Okay, your competitors are implementing it. Okay, they are responding to change in the government policy, change in the customer tastes and preferences. Your competitors are doing it.
Okay, so they are upgrading, and if you do not upgrade yourself, you will be outdated. Okay, and you will be out of the competition. Let us see what exactly the leaders can contribute. Okay, The leadership should ensure that changes do not generate resistance on the part of the people in the organization. The leadership should consider the following aspects. There should be concern for the people as well as for the objectives of the organization. so the leaders should make sure that changes do not generate resistance. We have already completed one answer जिसमें आपने study किया है कि resistance to change क्या होता है and what are the causes. So if you have good leaders, okay, they will not generate resistance. They will make sure that people are accepting changes. Firstly, okay, जब ये changes introduce करते हैं ना, तो leader को ना एक one sided नहीं होना चाहिए. Should not only think about organization, should equally think about people. Okay, so there should be concern for people as well as for the organization. एक अच्छा लीडर दोनों को साथ में लेके चलेगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और एम्प्लॉइज के कंसर्न को लेकर. Okay, then Employees should be encouraged to participate in the process of change rights for the intimation stage. इनिशियल एक्चुअली वो आई गेस टाइटल हो रहा है. एम्प्लॉइज को ना आप चेंजेस जब इंट्रोड्यूस करते हो, डू नॉट इन्वॉल्व देम in in the later stage, involve them from the beginning. Okay, if you are introducing the change, student, you have to understand कि एम्प्लॉय को एकदम लास्ट में नहीं बताना है, शुरू में बताना है. दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटेग्रल पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके कंपनी का. You can keep the business secrecy and all of it from the competitors. You cannot keep confidential with your employees. Okay, so शुरू से उनको involve करो ताकि वो retaliate ना करे. Then Change should be introduced with objective explanation. tell your people why are you introducing changes. Changes कर रहे हो लेकिन क्यों कर रहे हो वो बताओ. Okay, क्यों कर रहे हो बताने पर लोग accept करेंगे. क्यों कर रहे हो वो नहीं बताने पर people won't accept it. Lastly, Leadership should create a psychological climate suitable for change. हाँ, तो एक अच्छा लीडर क्या करेगा पता है, सबके माइंड में एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश करेगा. एक अच्छा लीडर ओके चेंज को बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं. ओके, बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल क्लाइमेट. ओके, and in the minds of the people, okay, and informing them that the change is necessary and this changes will help them also grow. Okay, तो एक अच्छा लीडर एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है. नीडलेस टू टेल यू स्टूडेंट्स, अच्छा एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है. ओके, बीट कंपनी, बीट इन द क्लासरूम, बीट योर होम, आपका घर. ओके, एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है. If there are clashes, if there is violence, if there is abusements, okay, I think people would never grow and progress. Okay, तो एक अच्छा लीडर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे wherein the changes can be implemented smoothly. I hope there is no doubt still here. No, ma'am. No, ma'am. Okay, all right. Okay. Moving on to the second one, that is integrating the conflicting interest. पहले तो meaning समझ लो before we get into the answer. Integrate करना, combine करना. Okay, conflicting यानी दो लोगों का बीच में agreement नहीं है, दो लोगों के views अलग है. Okay, तो जब दो parties के interest अलग होंगे ना, okay, तो वहाँ पे conflicts होने वाला है. Okay, तो अगर एक अच्छा लीडर क्या करेगा पता है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करेगा, यानी कि एक नेगोशिएशन, एक बीच का रास्ता बनाना. ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन की भी बातें रखो और मैनेजमेंट की भी बातें रखो. अगर 10 पॉइंट्स डिस्कस हुआ है तो 5 पॉइंट ट्रेड यूनियन के फेवर में जाए, तो 5 पॉइंट कंपनी के मैनेजमेंट के फेवर में जाए. ओके, लाइक दिस, in this manner the leader can help to integrate the conflicting interest. Otherwise तो दोनों पार्टीज लड़ते ही रहेंगे. ओके, एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन. अटर टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, रिसोर्स वेस्ट, मनी वेस्ट. करेक्ट ना? So that should not happen. Hence a good leader will always
try to integrate the conflicting interests. Let us see how it is written in the textbook. Okay, Sarita. Integrating conflicting interests. Organization consists of various people, group, department, or subunits. Every people or group may have certain interests which may clash with those of other in the organization. For instance, there can be conflict of interest between the superior and subordinate, top level and the lower level, between the production department and the marketing department, and so on. Therefore, an important role of leadership at various levels is to integrate the conflicting interests of people and group in the organization. Of course, when you're running the company, there will be conflict between two people, two department, two group of people, okay, or two different level of people. Supervisor और worker के बीच में conflict हो सकता है, manager और executive के बीच में conflict हो सकता है, अलग अलग departments के बीच में conflict हो सकता है, like that. और ऐसे में एक अच्छा leader होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा leader है ना, सबको लेकर चलेगा. Okay, एक right leader will be someone who is going to integrate everybody's interest. Okay, अगर production department की बात मानी जा रही है तो similarly marketing department की भी बात मानो. Okay, so that's how a good leader will try to bring balance, in the working of the organization. Let us see what it is written in the next paragraph. It is to be noted that some amount of conflict are desirable in the organization. This is because some conflict facilitates change in the organization. Conflict may arise due to problem in the functioning in the organization. Conflict bring to surface dormant or latent problems and help the organization in solving it. The solution of the problem often requires change in the organization. Yeah, I think sometimes a little bit conflict is important. Okay, this will help to kind of look at a different perspective. Okay, थोड़े बहुत conflicts तो होने चाहिए. If everybody is thinking same, if everybody is thinking alike, you're not thinking something unique. अगर सब कोई एक चीज को मान रहे हो, okay, और कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई उसको डिसएग्री नहीं कर रहा है, मतलब आप क्रिएटिव चीज नहीं कर पा रहे हो. Okay, so the second paragraph is saying conflict is going to be there in the company, and it is good that there should be conflict. However, you need to have someone in the company who can manage the conflicting situation. कंपनी के अंदर एक अच्छा लीडर ये कॉन्फ्लिक्ट को ना अच्छे से मैनेज करना चाहिए. Okay, let us see how it is written further. Ma'am, हाँ, बोलो ना क्या हुआ. ma'am, dormant and latent problem means? First of all, let us understand what is surface dormant or latent problems. देखो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, जब दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है, और या दूसरे दूसरे लेवल के लोगों के बीच में होता है, ये ना आपका नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा. योर रूटीन, योर शेड्यूल विल बी अफेक्टेड. Okay, so latent problems are those problems which will arise later on, not now. It is not something which is going to evolve now. जैसे आज मेरा और आपका प्रो नहीं जम रहा है, हम लोग एक ही टीम में हैं. Okay, so this problems the outcome, okay, or the result, okay, that will be seen later on. The actual issues will be seen later on. आज के दिन तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में है, डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं. ओके, एंड देन द लेटेंट प्रॉब्लम्स यानी कि दोस इश्यूज बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके, अराइज बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल बी सीन लेटर ऑन. ओके, दीज आर समथिंग व्हिच इज already there. Okay, but it is not it is present. Okay, these problems are present. Okay, but these are, you can say, more potential to happen at the later stage. Okay, तो ये होता है latent problems. Okay? For example, I and Mehak is in one team. Okay, and today there is a disagreement between both of us. Of course, there is a problem between both of us. हमारा thinking same नहीं होगा. Okay, तो आज के दिन ही मेरा टीम सफर करेगा या मेरा टारगेट सफर होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. इट विल बी समथिंग दैट the issue will be actually we will be able to visibly see the issue after some time. Okay, तो अब मैं और महक एक ही टीम में काम कर रहे हैं, आज हम लोग का डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो आज के दिन ही हमारा नुकसान होने वाला है, कंपनी का जरूरी नहीं है. ओके, ये थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि हमारे डिसएग्रीमेंट के वजह से, ओके,
कंपनी को कितना नुकसान हुआ. Okay, so that is called as latent problem. Okay, these problems are right now, it is there, but it is not much visible. Okay, and it is going to be more visible later on. Okay, जब actually में losses दिखाई देगा ना हम दोनों के disagreement के वजह से, जब project में जो problems आए, okay, तो वो problems बाद में दिखाई देगा. That is latent problem. Service dormant or latent. You can use either of the words. Okay. Service dormant यानी कि something which is not seen now, okay, invisible, okay, but surely there is something major issue that exists. इसको बोलते हैं surface dormant. Okay. I preferably use latent word because latent you can remember also. Okay, so latent याद रखना कि conflicts will create problems not now. Today we are just disagreeing. Okay, today I and my team member is just disagreeing. Okay, the actual issue will be noticed after few days. Okay, हमारी conflicts के चलते हमारे project में जो भी फॉल्ट हुआ या हमारे प्रोजेक्ट में शॉर्टकमिंग हुआ या जो हम टारगेट नहीं अचीव कर पाए, हमको थोड़े दिन बाद में वो विजिबली दिखाई देगा. आज हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से वो इनविजिबल है. ओके, तो ये प्रॉब्लम्स जो है और जो कि पोटेंशियली और बड़ा बन सकता है. ओके, और भी बड़ा प्रॉब्लम्स बन सकता है. तो every company when they have conflicts, okay, this is going to create latent problems. Okay, तो अगर आपके पास अच्छे लीडर्स हैं ना, तो वो स्टेज आएगा ही नहीं. Even before that stage come, the leader is going to repair the damages. Okay, अच्छा लीडर होगा तो वो क्या करेगा, मुझे और महक को आज ही समझाएगा. Okay, कि आपके बीच में जो ये डिसएग्रीमेंट है ना, ये इसके वजह से आपको आज नुकसान नहीं दिखने वाला है, बाद में दिखाई देगा और दोनों ही पार्टीज लूज लूज सिचुएशन में रहोगे. Okay, there is no win-win situation, there is no win-lose situation also. ऐसा भी नहीं है कि मैं और महक में कोई एक जीत रहा है एक हार रहा है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग दोनों जीत रहे हैं. ओके, इनफैक्ट आउटकम क्या होगा, दोनों लूज होने वाले हैं. दैट इज अ लेटेंट प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू हैपन. एक अच्छा लीडर होगा ना, वो इस डैमेज को पहले ही कंट्रोल कर लेगा. ओके सरिता, you can go ahead. Yes, ma'am. It is also true that conflict can create problem in the organization. Among other things, conflict affect interpersonal relation. This is because each person or group tries to find faults with other rather than trying to sort out the conflict. People involved in conflict may spread false information. There is loss of trust and faith in each other. In general, conflict can adversely affect the performance of the organization. Therefore, effective leadership is required in sorting out conflict in the organization. Yeah, because in the process of conflict, person can get too way too personal. Okay, for example, में जो लोग conflicting situation में थे, they start spreading rumors about each other. Okay, they may also spread false information, जिसकी वजह से I think the element of faith and trust will be gone. Okay, so conflict can result into adverse performance, of the organization. तो एक अच्छा लीडर है ना, ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं. उनके एक राइट लीडर को पहले ही दिखाई देगा कि आज के दिन जो इनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो आगे जाके कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और उसे कैसे कंट्रोल करना है, अभी से ही कैसे रिपेयर करना है, अभी से ही सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में लाना है. तो ओनली इफेक्टिव लीडर्स कैन डू दैट. ओके, आई थिंक लीडर के ऊपर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है और उससे कई ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है लीडर को टू बी अ नेगोशिएटर. Okay, to be someone who is trying to bring some solutions to the company, who is trying to bring solutions to both the parties. Okay, who is trying to bring peace in the organization. Okay, because company में जब conflicts होगा तो वहाँ पे पीस तो बहुत डिफिकल्ट है. तो एक राइट लीडर जो होगा ना, ही कैन ब्रिंग पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन. I hope there is no difficulty in understanding till here. I hope Mehak, the No, latent ma'am. issues are also understood.
और दी सरफेस Yes, डॉर्मेंट. ma'am. बॉटलनेक वर्ड भी यूज Yes. कर सकते हो अगर आपको यूज करना है तो. Bottleneck issues are those issues which keep arising again and again and you are stuck and you don't get the solution. Okay, conflict के वजह से ये भी हो सकता है. For example, मैं और महक एक ही टीम में है और bottleneck issues बार बार आएगा क्योंकि हम दोनों कभी एक तरीके से सोचते ही नहीं है, तो हम ऐसे इश्यूज में आके अटक जाएंगे जिसका सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा. Okay, these are bottleneck issues. Okay, तो लेटेंट इश्यूज जो अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन बाद में पोटेंशियल प्रॉब्लम बन के ओके कंपनी के आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. okay? इसीलिए ऐसा हम बोलते हैं ना कि कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में. थोड़ा बहुत हेल्दी कंपटीशन हो दैट इज ओके बट कॉर्डियल होना चाहिए. पीपल शुड नो दैट हमारा कॉमन कंसेंसस पे आना बहुत जरूरी है. मैं और मैं एक पॉइंट पे आना बहुत जरूरी है. ओके कुछ चीजें मैं कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करूँ, कुछ चीजें मैं कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस करे so that you know the company is not affecting with its objectives. So conflicts can result into so many things and a good leader will try to balance. Let us go ahead with developing leadership ability for managers. Okay, Developing leadership abilities of manager. Manager need to be effective leader. This is because manager need to influence and inspire the subordinates in order to accomplish the organizational goals. For this purpose, there is a need to develop leadership ability in the manager. There are several measures which can be used for developing leadership ability of the manager. हाँ एक राइट लीडर सिर्फ खुद के पास ही क्वालिटीज नहीं रखता है, ही इज ऑल्सो ट्रांसमिटिंग दोस क्वालिटीज to the managers. Okay, because he has to understand he alone cannot control everything. Okay, because he's not a god. Okay, he has to understand that transferring and the responsibility to the most suitable managers is important. Okay, giving them authority is also important. Okay, this is going to create the trust factor amongst the managers. Manager ko kya lagega, wow, the leader is trusting me. Okay, so there are several measures which can be used. For example, you can do leadership training. I'm not advising here to read, I'm just explain you in short. You can conduct various programs, okay, that will help the manager to get insight about leadership qualities. Internal exposure, where the managers can be made to face certain problems which otherwise the leader was handling. Okay, तो अभी manager को बोला जाएगा you handle this internal issues. Okay, challenging task can be set by top management, okay, to the managers so that managers start taking up leadership qualities in them. Okay, autonomy as well as accountability. Okay, managers should be given enough space and freedom, okay, to handle the situation. And at the same time, अगर आपको इतना freedom दिया जा रहा है तो you are also accountable. Accountable यानी आप उसके जिम्मेदार हो, answerable for your you're answerable for your conduct. Okay, so this is again a good leader will try to instill all these qualities amongst the managers. One man army, one man show nahi hota hai company. Okay, you have to understand no matter how good the leader is, how effective he is, okay, but he's not going to be there forever, right? So he has to क्रिएट मोर लीडर्स. ओके, यही है एक्चुअली सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर के ऊपर, तो यही होना चाहिए दैट ही इज सपोज्ड टू क्रिएट मोर लीडर्स इन द कंपनी. ओके, सो ऑलराइट, आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी टिल हियर. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay, so again here if you see developing appropriate organizational climate, I don't think so there is need to read. A good leader will create a climate where there is certain values and belief and norm, organization ka culture which will be shared by everyone. Okay, and of course कोई भी चीज को ना स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है. ओके, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो, आपका वैल्यू हो, आपका बिलीफ हो, कुछ भी, लेकिन एक राइट लीडर उसको स्टेबल करने में और एम्प्लॉइज को वो क्वालिटी इंस्टिल करने में बहुत मदद कर सकता है. कि नॉट ओनली दैट ही कैन ब्रिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, he can help to develop high standards of moral character. Okay, that you have to do the work with all ethics.
He will encourage the employees for innovation. Okay, that focus on doing something new, because doing outdated things will not help you in long run. Okay, so all these things can be done by a good leader to create a positive atmosphere within the company. Okay, apart from this, a good leader will also help to develop motivational system. For example, he understands that people only get motivated if you are, giving them something in return. Okay, so it can be financial rewards, or it can be, recognition. Okay, any of that sort. Okay, a good leader will try to bring this into reality. Okay, and not just in discussion. Okay, टॉप मैनेजमेंट शायद मोटिवेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करते होंगे. ओके, नोटिस डाल के एजेंडा, मीटिंग के एजेंडा में मिनट्स में डालते होंगे, लेकिन उसको रियलिटी में लाना एक अच्छे लीडर का काम होता है. ऑल्सो अ गुड लीडर विल हेल्प टू ब्रिंग क्लैरिटी इन गोल्स. ओके, तो कंपनी के जो गोल्स है उसके अंदर क्लैरिटी लाना, एम्प्लॉयज को बताना कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी वांट्स टू अचीव, what it is now and what it wants to achieve in the future. It can be explained with a good leader. Relations, I think a good leader will try to bring cordial and excellent relationship between the subordinates. Group cohesiveness के ऊपर focus करते हैं अच्छे leaders. And then last point is leadership style. Okay, I think we have already covered leadership style in the previous lectures. Okay, quite often students, it is advisable to have situational leaders जो situation के basis पे अपना leadership style change करते हैं. कभी ऑटोक्रेट बनो, कभी ब्यूरोक्रेट बनो, कभी डेमोक्रेटिक बनो, कभी कंसल्टेटिव बनो, कभी लेजी फेयर बनो, कभी पैटर्नलिस्टिक लीडर स्टाइल अडॉप्ट करो. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन चेंज योर लीडरशिप स्टाइल. आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी इन द आंसर. No, ma'am. No, ma'am. All right, I'll No, meet the HR students at 10:30. 10:30 को है ना मेरा lecture. So I'll meet you at that time. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, See you. ma'am. Yeah. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Ma'am.